हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स जून 2024 फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बैंकिंग एग्जाम या एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू हेल्प सिटीजन ट्रेस अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स। ये अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो इंक्लूड करता है आपके फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या आपके insurance receipts. The campaign, which was launched by DFS to spread awareness about this unclaimed financial asset portal, उसका नाम क्या है? इसके ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, जनधन, जन सुरक्षा, योर मनी योर राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम मिशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों योर मनी योर राइट is a campaign which is launched by Department of Financial Services to spread awareness among citizens about the unclaimed financial asset portal. Next question. The TOFI app is related to tobacco-free education institutions. The pilot phase of TOFI app was launched in which state? तो TOFI ऐप जो लॉन्च किया गया है उसका एम ये है कि विद इन द रेडियस ऑफ 100 मीटर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देयर इज अ बैन ऑफ टोबैको सेल सो दैट द यूथ डज नॉट गेट एडिक्टेड टू टोबैको। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है राजस्थान, मेघालय एंड महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड केरला, बिहार, यूपी एंड एमपी, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों द राजस्थान, मेघालय एंड महाराष्ट्र। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि में DGR3 has crossed how many seamless journeys? DGR3 was launched by Ministry of Civil Aviation to travel to make the journey without paperless and through face फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हम लोग ट्रैवल कर सके और हमारी यात्रा स्मूथली हो जाए, इसलिए DGR3 ऐप लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। एट द एंड ऑफ May 2026 it has crossed how many seamless journeys? तो इसका राइट आंसर है 10 करोड़ सीमलेस जर्नी DGR3 ऐप ने कवर कर ली है मई 2026 के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Samadhan Didi, the AI-enabled voice chatbot associated with which of the following? So Samadhan Didi, the AI-enabled voice chatbot, which is launched by CPGram portal. तो CPGram जो है हमारा पब्लिक ग्रीवेंसेस रिट्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रिलेटेड टू ग्रीवेंसेस ऑफ सिटीजन, उसमें समाधान दीदी एक AI चैटबॉट रिलीज किया है which supports 22 languages, Indian languages. So next question है, which organization launched the centralized online patient feedback system to capture beneficiary feedback? तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पेशेंट फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है to capture beneficiary feedback in order to increase the efficiency of customer service. तो इसमें से आपके ऑप्शन थे एम्स, दूसरा है ईसैक, तीसरा है NHA और फोर्थ है ICMR। तो इसका करेक्ट आंसर है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी इज ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लॉन्च्ड द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पेशेंट फीडबैक सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द स्वच्छ मोबाइल ऐप टू रिपोर्ट सिविक सैनिटेशन इश्यूज बाय सिटीजन? तो इसके आपके ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट जो है उसके अंडर स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और लॉन्च जो हुआ है वो हुआ है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। तो द राइट आंसर इज श्री मनोहर लाल खट्टर। The GOMA Innovation Challenge to develop open source multilingual voice first AI solution that work offline in low connectivity area was launched by आपके ऑप्शन है इसरो, सेकेंड ऑप्शन है भाषिनी, थर्ड ऑप्शन DRDO, फोर्थ ऑप्शन है CDAC। तो गोमा इनोवेशन चैलेंज जो डेवलप करेगा ओपन AI मल्टीलिंगुअल
in multilingual languages in a rural or semi-urban area where there is a no network or very less connectivity was developed by, the correct answer is Bhashini division of MITI, which is Ministry of Electronics and Information Technology. Next question is, how many Padma Awards were presented in the first civil investiture ceremony 2026 at Rashtrapati Bhavan by President Draupadi Murmu in field of art, medicine, literature and public services? तो इसका right answer है 66. So 66 Padma Awards were presented in the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan, Delhi by President Draupadi Murmu in the field of art, medicine, literature and public services. Next question is, which country honored India with 2 Labitum Awards for excellence in serving guests of Allah for services provided to Hajj pilgrims, Hajj and Umrah pilgrims? तो आपके ऑप्शन है यूएई, सऊदी अरब, कतर and Oman. So इसका correct answer is Saudi Arab. Saudi Arab has honored India with 2 Labitum Awards for excellence in service to Hajj pilgrims. B.T. Paluan, a farmer from Kochi, Coimbatore district, Tamil Nadu, became first Indian to receive which award? Option A, Raman Magsaysay. Option B, FAO Soil Farmer Hero Award. Option C, UNEP Green Award. Or option D, Global Farmer Award. So the correct answer is FAO Soil Farmer Hero Guardian Award was awarded to V.T. Paluan, and he has become first Indian to receive this international honor. Next question. My Bharat is an online youth leadership and social engagement program to empower youth to become leader and active citizens. Earned a Guinness World Record for which of the following category? Option आपके है इसमें largest rally, option B है longest marathon, option C है most users taking online quiz in 1 week, option D है largest plantation. तो माय भारत प्लेटफॉर्म जो है जिसमें यूथ को एंगेज किया गया है और उनको एक्टिव सिटीजन बनाने की कोशिश की गई है, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है इन अ कैटेगरी ऑफ मोस्ट यूजर्स टेकिंग ऑनलाइन क्विज इन वर्क 1 वीक. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पार्टनर्ड विथ विच इंस्टीट्यूशन फॉर डीप टेक एंजल फंड टू प्रोवाइड अर्ली स्टेज कैपिटल एंड मेंटरशिप to startups developing technologies like AI, quantum computing, space tech, and advanced materials. So, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. इसके ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई, आईएफसीआई. तो करेक्ट आंसर है सिडबी. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पार्टनर किया है सिडबी के साथ फॉर डीप टेक एंजल फंड टू प्रोवाइड अर्ली स्टेज कैपिटल एंड मेंटरशिप फॉर स्टार्टअप related to technologies like AI, quantum computing, space tech, and advanced materials. Very good question. So please mark it as important. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. द सुप्रीम कोर्ट upheld what GST rate on online gaming in India in case of GameCraft technology. तो इसका आंसर है दोस्तों 28%. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग. डेवलपमेंट बैंक ऑफ Japan partnered with which financial institution to bid corpus of $1 billion for financing and developing green, affordable and mid-income housing projects across India. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. तो इसको भी मार्क कीजिए एज इम्पोर्टेंट. आपके ऑप्शन है LIC हाउसिंग, SBI कैपिटल, HDFC कैपिटल और फूडको. तो इसका सही ऑप्शन है डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान हैज पार्टनर्ड विद HDFC कैपिटल and has developed a H Dream Fund of $1 billion for financing and developing green, affordable and mid-income housing projects across India. अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों. वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक पार्टनर्ड विथ विच इंस्टीट्यूशन टू सेल बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. तो ये बहुत कॉमन है दोस्तों कि जो भी बैंक है वो पार्टनर करता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टू शेयर बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट्स in order to cover the bank's liabilities with the customer. तो इसका सही आंसर है दोस्तों
Canara HSBC Life Insurance. West Bengal Grameen Bank has partnered with Canara HSBC Life Insurance products to sell bank insurance products in rural and semi-urban areas. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी कलेक्शन का फिगर क्या है इन मई 2026. So GST collection has crossed 1,94,000 crores in May 2026. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. बैंक ऑफ बड़ौदा हैज allowed a limit of how much with biometric authentication of face authentication with the help of UDI in its ePay app without requiring a PIN. तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 5,000 rupees. So without entering the PIN in the ePay app of Bank of Baroda, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से 5,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं. ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों. फर्स्ट पेमेंट ऐप टू सिक्योर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर. तो इसका ऑप्शन है रिजर्व पे, कैश फ्री, डिसेंट्रो और पे यू. ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज के बैकग्राउंड से. तो इसका आंसर है डिसेंट्रो. डिसेंट्रो इज द फर्स्ट पेमेंट ऐप टू सिक्योर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर. UPI is the indigenous app developed by India and it has processed record transitions in May 2020. So what is the transition number? Correct answer is 23.20 billion transitions are being processed by UPI in May 2020. Next question. The government revised the base year of wholesale price index from which year to which year? So ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो यूज होता है हमारे कैलकुलेशंस फॉर इन्फ्लेशन रेट और बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट हमारे फाइनेंशियल सर्वे कवर होते हैं, हमारा बजट डिसाइड होता है. तो इसका करेक्ट आंसर है बेस ईयर चेंज हुआ है होलसेल प्राइसेस इंडेक्स का फ्रॉम 2011-12 टू 2022-20. अगला क्वेश्चन दोस्तों. अलॉन्ग विद द रिवाइज्ड wholesale price index, the government introduced new index. What is the name of the index? तो इसका भी आंसर है दोस्तों प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. Government has introduced new index in order to quantitatively and qualitatively study the inflation and macroeconomics of the country. तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है विच टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन लेवल प्राइस डायनेमिक्स. प्रोडक्शन लेवल पे क्या क्या कॉस्टिंग वेरी कर रही है उसके लिए हमारे पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आया है. महिंद्रा मनुलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन महिंद्रा फाइनेंस एंड मनुलाइफ कंपनी. नेक्स्ट. NPCI इंटरनेशनल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हैज पार्टनर्ड विद कोलंबियन बैंक इन कोलंबिया and Colombia has become the 9th country to adopt UPI. What is the name of the bank? So इसका करेक्ट आंसर है ACLEDA बैंक. जो नेशनल बैंक है कोलंबिया की उसके साथ पार्टनर किया है NPCI इंटरनेशनल ने टू प्रोसेस द UPI ट्रांजिशन इन कोलंबिया. कोलंबिया लॉन्च नेशनल QR कोड इंटीग्रेटेड विद UPI known as. तो इसका आंसर है KHQR. QR कोड लॉन्च किया है कोलंबिया ने विच इज इंटीग्रेटेड विद UPI ऑफ इंडिया. भारत पे फ्लेक्स प्रोडक्ट ऑफ भारत पे and Yes Bank has launched a new product which is called as credit on UPI solution. So Bharat Pay Flex is a new product launched by Bharat Pay in collaboration with Yes Bank to give credit up to 60,000 based on UPI transactions. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिए. The book India's first Olympic gold was authored by which historian and released by P.T. Usha. So historian K. Arumugam has launched the book India's first Olympic gold, which was released by P.T. Usha. Cabinet approved a vehicle replacement scheme to replace old polluting trucks and buses in Delhi NCR region with a cleaner BS6 vehicles or EVs.
with the aim to replace 2.07 lakh vehicles at a outlay of how much fund? So the correct answer for this question is 9,585 crores. So the cabinet approved a vehicle replacement scheme with a budget of 9,585 crores to replace the polluting trucks and buses in Delhi NCR region with cleaner technology vehicles like EVs or BS6. Next question is the revised wholesale price index now covers how many items? So the revised WPI covers 957 items. The renewable sources newly added to wholesale price index includes which of the following technologies? Solar and wind, hydro and biogas, hydrogen and solar, wind and tidal. The correct answer is solar and wind technologies has been added to renewable sources to WPI. Service purchase producer price index initially covers how many sectors? The service producer price index initially covers 7 sectors right now. India has signed a USD 629 million deal for BrahMos missile export. So which of the country India has signed this deal with? This is also very important questions. So the options are Indonesia, Philippines, Vietnam, or Malaysia. So the correct answer is Indonesia has become the second country in Southeast Asia after Philippines to sign a deal of USD $629 million for BrahMos missile export. So Rudram 2 is a air-to-surface missile. So Rudram 2 is an air-to-surface missile with a range of 300 kilometers and speed of 5.5 Mach, jointly tested by DRDO and which of the following? So आपके ऑप्शन है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड. तो करेक्ट आंसर है Indian Air Force. So DRDO jointly with Indian Air Force developed a Rudram 2 air-to-surface missile with a range of 300 kilometers and speed of 5.5 Mach jointly. Next question is AUKUS, Australia, UK and USA jointly launched which of the following programs? Satellite program, underwater drone program, space mission, cyber command. So AUKUS has launched underwater drone program to develop UUV, AI-powered underground unmanned vehicles, AI-powered unmanned undersea vehicles. तो ये भी एक important question दोस्तों. World Bicycle Day with the theme Cycling for a Greener Future is observed on which of the following days? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है वो किस डे पे ऑब्जर्व किया जाता है? 3 जून पे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे, और उसका थीम इस साल का है 2026 का साइकिलिंग फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. तेलंगाना स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों. नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 मई. जैसे कि आप जानते हैं कि टोफू ऐप रिलीज किया गया था, तो उसके रिस्पेक्ट में नो टोबैको डे कब आता है ये भी हमें याद रखना चाहिए दोस्तों, और वो आता है 31 मई. और 2020 थीम फॉर नो टोबैको डे इज अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन. तो ये भी याद रखिए दोस्तों. तो टोफू ऐप पायलट ऐप was launched by यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी का नाम पुनिया कालिला श्रीवास्तव है. पुनिया कालिला श्रीवास्तव. Janis Jansa became the prime minister of which of the following countries? Janis Jansa has become the prime minister of Slovenia. Slovenia के prime minister बनी है Janis Jansa. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक के रिलेटेड, स्टैटिक अवेयरनेस के रिलेटेड है. द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया क्या है दोस्तों? तो कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया है Ljubljana. Ljubljana. So next question है RBI extended term of Ketan Merchant for 3 months to make him the interim CEO of which of the following? So RBI extended the term of Ketan Merchant for a term of 3 months
to become the interim CEO of Inno Payment Bank. Next question. Admiral of Indian Navy Sri Ajay Kochar was appointed as Vice Admiral of Indian Navy. Sri Ajay Kochar was appointed as the Vice Chief of Naval Staff recently. Lokhande Prashant Sitaram was appointed Chairman of Dash. Lokhande Prashant Sitaram was recently appointed as Chairman of CBS, who became the new Chief Minister of Karnataka and took over from Governor Thawarchand Gehlot. So first of all, we should know the Governor of Karnataka is Thawarchand Gehlot, and Mr. D.K. Shivkumar became the new Chief Minister of Karnataka. Supreme Court Collegium recommended how many names for appointment as judge to Supreme Court, bringing the Supreme Court sitting strength to 37. So Supreme Court Collegium, which was headed by Chief Justice of India, has recommended the name of 5 judges to Supreme Court. Supreme Court Collegium is headed by Chief Justice of India, which is Justice Surya Kant. Under Article 124(2), Supreme Court judges are appointed by President of India. Wave OTT platform is offering over 24,000 content titles and 140 plus live TV channels. This is a platform by DD News, Prasar Bharati, All India Radio, MIT. So the correct answer is Prasar Bharati. Prasar Bharati has launched a Wave OTT platform offering 24,000 content titles and 140 plus live TV channels. The revised wholesale price index is a switch weighing methodology. So various methodologies are used to calculate the wholesale price index. The correct method is gross value of output. The producer purchase index initially includes. So the producer price index, producer price index initially includes which of the following: banking, insurance, railway, and all of the above. So इसका correct answer है all of the above. Deendayal Upadhyay Panchayat Satat Vikas Puraskar is associated with which of the following? So it is associated with sustainable development in Panchayat. तो करेक्ट आंसर है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पंचायत। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे लगे वो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of June. J&K Bank has received gold in Pinnacle Innovation Awards for best MSME bank. Quantum Safe Ecosystem Roadmap was released by DST to protect from quantum threats. और ग्लोबल डेज ऑफ पेरेंट ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका करंट ऑप्शन वो ग्लोबल डेज ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व 2nd of June। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों।